Let us discuss this problem of rotational mechanics. इसमें दिया है कि there is a uniformly dense rod of length L. It is pivoted at its center. It is pivoted at center and it is placed on rough horizontal ground. Friction coefficient, static as well as kinetic, is 0.5 between rod and the ground. So with this information we have two questions. First one is that if we apply a certain force at end of this rod perpendicular to rod and in plane of that ground, उस प्लेन के पैरेलल एक फोर्स लगाते हैं पी रॉड के एंड पर और रॉड के परपेंडिकुलर, तो हमें पी की मिनिमम वैल्यू बतानी है. वी हैव टू फाइंड minimum value of P so that this rod could start rotating. And second question is that if the rod is given certain angular velocity omega initial such that omega initial square is 18 pi g by L, where L is the length of rod, then suppose rod stops after n rotation, then what is the value of n? And here P is least value of P is equated with a expression n upon 20 into mg. We have to find n, which is to be an integer. So you try and then see this solution which I have discussed here. After you have tried, the solution answer should be, for first one answer is C part. C means this 5, and for the second one n should be, number of rotations should be B, that is 3. So let us see the solution. And for solution we consider this rod and the friction forces which will act on it if we try to rotate it. Suppose I try to rotate it anti-clockwise. So from this side, right half, friction force will act like this, because this will move forward and this will try to come backward. So friction force will on this left half will act like this, and both forces will try to produce clockwise torque. Obviously it is opposite to the torque which P is going to apply. So what should be our purpose? Our purpose should be first to find what will be the maximum torque which friction forces will exert about this pivot point and its center. Right? So we don't know where this friction force will act. So there is only one choice. We consider a small element. एक small element लिया जाए, उस पर फ्रिक्शन फोर्स देखें और उस फ्रिक्शन फोर्स का इस पाइवट के अबाउट टॉर्क देखें, फिर टोटल पाने के लिए उसको इंटीग्रेट कर लें. तो आई हैव कंसिडर्ड ए एलिमेंट एट डिस्टेंस x of length dx, and because the weight is uniformly distributed, we have assumed it and it will be practically correct. तो यूनिट लेंथ का वेट क्या होगा, mg by L, एंड dx लेंथ पर का वेट हो जाएगा mg by L इंटू dx. जितना ये वेट आएगा उतना इस पर नॉर्मल रिएक्शन होगा, and this normal reaction multiplied by friction coefficient will be the friction force, because it is going to slip. So full friction force yani maximum friction force will act, and this friction force is acting at distance x from the pivot. जिसका जो टॉर्क होगा वो पाने के लिए इस फ्रिक्शन फोर्स में हम x मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज आर्म.
तो डी एफ सिंबल दिया मैंने फ्रिक्शन फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स डी एफ इंटू एक्स, डी एफ का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा। तो इस थोड़े से फ्रिक्शन फोर्स का सेंटर के अबाउट टॉर्क हो गया, इसको डी टाउ कह दिया जाए तो टोटल टॉर्क हो जाएगा ऑन द वन हाफ, लेट अस से राइट हाफ, एक्स की लिमिट 0 टू एल बाई 2 कर देंगे, इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देंगे, राइट। वी विल गेट म्यू एम जी एल बाई 8 एंड बाई सिमेट्री दोनों पार्ट पर सेंटर के अबाउट टॉर्क सेम आएंगे और सेम सेंस में आएंगे, ए भी क्लॉकवाइज ए भी क्लॉकवाइज। तो इस पार्ट का जो फ्रिक्शन है वो भी इतना ही टॉर्क इस सेंटर के अबाउट देगा। तो टोटल टॉर्क जो रॉड पे हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन वो इतना हो जाएगा, इसी का डबल, दैट इज दिस मच, म्यू जी एल बाई 4। और पी फोर्स पाइवट के अबाउट कितना टॉर्क देगा, पी एल बाई 2। सो पी एल बाई 2 शुड बी एटलीस्ट म्यू एम जी एल बाई 4 इन फ्रिक्शन का टॉर्क, तभी इसका मोशन स्टार्ट हो सकता है बाई पी। तो P should be greater or equal to mu mgl by 2. Mu is 0.5 given in the question. And this 0.5 can be 0.5 by 2 will be equal to 0.25. 0.25 can be written as 5 by 20. In question it is written as n by 20. So answer n will be 5. Right? And in second part, it is given that rod is given certain angular velocity. Instead of applying certain force, rod is given anti-clockwise or clockwise. In any sense, you can assume angular velocity omega I, such that omega is square equal to 18 pi g by L. तो क्या पूछा गया है कि if the rod rotates n turn and revolutions or in turn you can say before it stops, then what will be value of n। तो इसमें वो रिलेशन लगा सकते हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा इक्वल टू 0 इफ अल्फा इज कांस्टेंट, बिकॉज फ्रिक्शन कोफिशिएंट इज कांस्टेंट, डायमेंशंस आर कांस्टेंट। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो टॉर्क आया है यहाँ वो कांस्टेंट रहेगा, तो टॉर्क अपॉन आई, पाइवट के अबाउट आई ले लेंगे, आई विल बी एम स्क्वायर बाई 12, रॉड का जो होता है सेंटर के अबाउट। इससे एंगुलर रिटार्डेशन आ जाएगा 3 म्यू जी बाई एल, म्यू की वैल्यू डाल देंगे 0.5, तो 1.5 जी बाई एल, और फिर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0 होना है, तो रिलेशन ओमेगा इनिशियल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा इज ओमेगा फाइनल स्क्वायर दैट इज 0। तो यहाँ से थीटा का एक्सप्रेशन बन जाएगा ओमेगा इनिशियल स्क्वायर 0.2 अल्फा, अल्फा यहाँ से प्लेस कर देंगे, ओमेगा इनिशियल का जो एक्सप्रेशन दिया गया है। So we will get theta as 6 pi, means इतने एंगल रेडियंस में घूम के रॉड रुक जाएगी। तो उसका जो नंबर ऑफ टर्न आएगा हाउ मच, थीटा अपॉन 2 पाई, दैट विल बी 3 टर्न्स। वन थिंग क्वेश्चन आई शुड हैव रिटन, pivot rod is pivot at center, I think it is not written here, rod is pivoted at center, right? So this is simple but good problem. It is useful mainly for advanced. This kind of problem in some other form has been asked in JEE mains.